श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां उमा सहितायां अथ सप्तमोऽध्यायः। सनत कुमार उवाच। अथ पापेर्नरा यान्ति यं लोकं चतुर्विधे सन्त्रासजननं घोरं विवशा सर्वदेहिना गर्भस्थे जायमानेक्ष बालेस्तरुन् मध्यमे स्त्रीपुनः पुंसंकैर्जैव वैज्ञार्तव्यं सर्वजन्तुषु शुभाशुभफलं चात्र देहिना सन्विचार्यते चित्रगुप्तादिभिः सर्वे वसिष्ठप्रमुखैस्तथा न केचित् प्राणि न सन्ति येन यान्ति यमक्षयम् अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं तदचार्यताम् तत्र ये शुभकर्माणा सौम्ययचिता दयान्विता ते नरा यान्ति सौम्येन पूर्वं यं निकेतनं ये पुनः पापकर्माणा पापदान विवर्जिता ते घोरेण पथा यान्ति दक्षिणेन यमालयं षडशीतिसहस्राणि योजनानां तित्यतत् विवस्वत्वपुरं ज्ञेयं नानारूपं वस्थितं समीपस्थमिवाभाति नराणां पुण्यकर्मणां पापिनामतिदूरस्थं यथा रौद्रेण गच्छतां तीक्ष्णकण्टकयुक्तेन शर्कराविचितेन च क्षुरधारनिभैस्तीक्ष्णे पाषाणे रचितेन च क्वचित् पङ्केन महता जलोकाशभिषत्सङ्कुले लौहसूचिनिभैर्दर्भासम्पन्नेन पथा क्वचित् तत्प्रयाति विषमे पर्वते वृक्षसङ्कुले प्रतापतङ्गारयुक्तेन यान्ति मार्गेण दुःखिता कचिद्विषमगेतैक्ष कचिल्लोष्टे सुदुष्करे सुतप्तबालुकाभिक्ष तथा तीक्ष्णैक्ष शङ्कुभिः अनेकशाखा वितत्यैव व्याप्तं वंशवने कच्चिता कष्टेन तमसा मार्गे नानालम्बेन कुत्रचित् अयाशृङ्गाट् कैस्तीक्ष्णे कचिद्वागिना पुनः कचित्त्वप्तशिलाभिक्ष कचिद्व्याप्तहिमेन च कचिद्वालुकया व्याप्ता माकण्ठान्त प्रवेशया कचिद्दुष्टाम्बुना व्याप्तं कचित् करिष्यागिना कचित् सिंहैर्वकैर्या कैव्यर्याघैर्मक्षकैक्ष सुदारुणे कचिन्महाजलोकाभिः कचिचागरैस्तथा मक्षिकाभिक्ष रौद्राभिः कचित् सर्प विषोल्लम्बने मत्मातङ्गयूथैक्ष बलोन्मते प्रमाथिभिः पन्थानमुलिह्यद्विक्ष सूकरैस्तीक्ष्णन् दष्ट्रिभिः तीक्ष्णशृङ्गैक्ष महिषे सर्वभूतैक्ष श्रापदे डाकिनीभिक्ष रौद्राभिर्विक्रालश्च राक्षसे व्याधिभिक्ष महाघोरे पीडचमाना व्रजन्ति हि महाधूलिविमिक्षेण महाचण्डेन वायुना महापाषाणवर्षेण हन्यमानानि राक्षया कचिदित्युत्पातेन ध्वामाना व्रजन्ति च महता बाणवर्षेण विद्यमानाक्ष सर्वथा पत्विर्वच पातैक्ष उल्कापातैक्ष दारुणे प्रदीप्ताङ्गारवर्षेण दहामानाक्ष सन्ति हि महता पांसुर्वर्षेण पूर्यमाना रुदन्ति च महामेघर्वैघोरैस्तथा
त्रयस्यन्ते च मुहुर्मुहुः निशितायुर्वर्षेण भिद्यमानाक्ष सर्वथा महाक्षारम्बु धाराभिषिच्यमाना व्रजन्ति च महाशीतेन मरुता वृक्षेण परुषेण च समन्त्वाराध्य मानाक्ष शुष्यन्ते कुञ्चन्ति च इत्थं मार्गेण रौद्रेण पाथेयर्हितेन च निरालम्बेन दुर्गेण निर्जलेन समन्तता विस्मेनैव महता निर्जनापाक्षयेन च तमोरूपेण कष्टेन सर्वदुष्टाक्षयेन च नियन्ते देहिनः सर्वे ये मूढा पापकर्मिणः यमदूतैर्महाघोरैस्तत्याज्ञाकारिभिर्बलात् एकाकिना पराधीना मित्रबन्धुविवर्जिता शौचन्तः स्वानि कर्माणि रुद्रतङ्क्ष मुहुर्मुहुः प्रेता भूत्वा विवस्त्राक्ष शुष्ककण्ठोष्ठतालुका असौम्या भयभीताक्ष ध्वमाना शुद्धान्विता बद्ध्वा शृङ्खलाया केचिदुत्थानपादका कृष्यन्ते कृष्यमाणाक्ष यमदूतैर्बलोत्कटे मूर्धाधो मुख्याख्याने गृह्यमाना सुदुःखिता केशपाशनिबन्धेन सङ्कृष्यन्ते च रज्जुना ललाटे चाण्डकुष्ण्या कुशेनान्यभिना दुष्यन्ति देहिना उताना कप्था कचिदङ्गारवर्त्मना पश्चादाहुनिबद्धाक्ष जठरेण प्रपीडिता पूरिता शैलापेक्ष हस्तयोक्ष सुकीलिता ग्रीवापाशेन कृष्यन्ते प्रियान्तयन्ये सुदुःखिता जिहाङ्गकुशप्रवेशेन रज्ज्वा कृष्यन्त एव ते नासाभेदेन रज्ज्वा च व्याकृष्यन्ते तथा परे विना कपोलयो रज्ज्वा कृष्यन्ते न्यतथोष्टयो छिन्नाग्रपादहस्ताक्ष छिन्नकर्णोष्ठ नासिका सञ्चिन्नशिक्षवृषणा छिन्नभिन्ना सङ्गसन्धया आभिद्यमाना कुन्तैक्ष भिद्यमानाक्ष सायके इत्यक्षेतक्ष धावन्ता क्रन्दमाना निराक्षया मुद्ररैलोर्दण्डैक्ष हन्यमाना मुहुर्मुहुः कण्टकैर्विविधे घोरे ज्वलनार्कसम्प्रभे भिन्नदीपाले विर्भिद्यन्ते सर्वन्तपूय शोणितं शकृता कृम्यदिग्धाक्ष नीयन्ते विविशानरा याचमानाक्ष सलिलमन्न वापि बुभुक्षिता छायां प्रार्थयमानाक्ष शिताताराक्षानलं पुनः दानहीना प्रयान्त्येवं प्रार्थयन्त सुखं नरा गृहीतदानपाथेया सुखं यान्ति यमालयम् इवं न्यायेन कष्टेन प्राप्ता प्रेतपुरं यदा प्रज्ञापितास्ततो दूतैर्निवेशयन्ते क्षमाग्रता तत्र ये शुभकर्माणः सतांस्तु समान येद्यमा स्वागतासन्दानेन पाद्यधर्येण प्रियेण च धन्ययूयं महात्मानो निगमोदितकारिण यक्ष दिव्यसुखार्थाय भवति सुकृतं कृतं दिव्यं विमानमारुध्य दिव्यस्त्रीभोगभूषितं स्वर्गं गच्छ ध्वममलं सर्वकामसमन्वितं तत्र भुक्त्वा महाभोगानन्ते पुण्यसंक्षयात् यति किञ्चिदल्पं शुभं पुनस्तदिभोक्ष्यथ धर्मात्मानो नराये च मित्रभूता इवात्मना सौम्यं मुखं प्रपश्यन्ति धर्मराजानमेव च ये पुनः क्रूरकर्माणास्ते पश्यन्ति भयानकमा
दृष्टां करावलम्बनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् ऊर्ध्वकेशमहां शमुषुर्मूर्ध् प्रस्फुरिताधरम् अष्टदाशभुजं कृतं नीलायजञ्चयोपमं सर्वय आयुधोद्धृतकरं सर्वदण्डेन तर्जयन् महामहिषमारूढं दीप्ताग्रसं लोचनं रक्तमाल्याम्बरं धरं महामेरुमिवोच्छ्रितं प्रलयाम्बुध्निघोषं पिबन्निव महोदधिं ग्रसन्तीमिव शैलेन्द्रमुद्धृन्तमिवानलं मृत्युषैव सपीपस्था कालानलसम्प्रभा कालक्ष्या जनसङ्काश कृतान्तक्षभयानका मारीचोग्रमा मारीकालरात्रिक्षदारुणा विविधा व्याधये कुष्ठा नानारूपभयावहा शक्तिशूलाङ्कुशधरा पाशचक्रासिपानया वज्रतुण्डधरा रौद्राक्षूरतूणधनुर्धरा नानायुधधरा सर्वे महावीरा भयङ्करा असङ्ख्याता महावीरा काला जनसम्प्रभा सर्वायुधोत्करायं दूताभयानका अनेन परिचारेण वृतं तं घोरदर्शनं यम पश्यन्ति पापिष्ठा चित्रगुप्तं च भीषणं निर्भर्त्सयति चात्यन्तं यमस्तान् पापकर्मणा चित्रगुप्तक्ष भगवान् धर्मवाक्य प्रबोधयेत् इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां नरलोकमार्ग यमराज स्वरूप वर्णन नाम सप्तमोऽध्याय।